I'll चलने दो, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, मैं रुक जाऊंगा. ओके, I'll try to complete on time. Okay, don't worry. इंशाल्लाह. ठीक है. ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व. Air, here fish, 36 meter, here bird, distance between that is 24 meter, and the value of mu is 4 by 3. 4 by 3. Now the first question is distance of fish. Distance of fish observed by bird. That's the first question. Another question, distance of bird observed by fish. Try to implement the yesterday's lecture formula for this bird fish problem. You can solve them. Try to solve as fast as you can. Think which formula you have to apply in this particular question. Think. In first question, the observer is bird. In another question, the observer is fish. If the observer is bird, then the formula we have to apply is h by mu plus L. It's very simple. Put the value and solve. Just remember that. If the questioner, examiner is trying to ask that in this particular question, the observer is bird. Simple formula, h by mu plus L. Simple formula apply, h by mu plus L. Put the value and solve the equation, you will get the answer, final answer. And what's the final answer? Let me know. Be fast. Try to solve the question under a minute. In less than a minute, okay? Try to have the same attitude as though you are sitting in the examination hall and your competitor is getting more marks. They are solving the questions efficiently. What's the answer? Suma? Very good. Amazing. Next. Jishan. What's the answer, man? Let me know. For the second question. In this, which formula you have to apply in the second question? Second question, Prachi, mu L plus H. Of course, you are right. Mu, what is the value of mu? 4 by 3 into L. What is the L? Which one is the L here? Put the value, solve, and let me know the answer. Be fast.
when we have derived the formula, we have taken this measurement as h and this particular as L. Yes or no? During the derivation, we have done that. So here L is what? 24 plus h. What is h? H is 36. 8 times it will go. Okay, you will get after solving this 8 fours are 32 plus 36. After doing the sum, what you will get? Bolo? 68. Is that the final answer? Yes or no? In the first one you will get 51. 51 for the first one. Just remember that if the examiner is asking that observer is bird, then simple formula h by mu plus L. H by mu plus L. What if the observer is fish? Mu L plus H. Mu L plus H. And you have to remember which one is the L and which one is the H. If not, you will get confused. Be clear, like water. Okay, H. H is 36 by mu, 4 by 3 plus L. What is L? 24. Okay, 4 9s are 9 3s are 27 plus 24. If we will add that, it will sum up and you will get 51. Is it okay? Yes or no? Should we proceed to the next question? And here comes the next question. This question is very simple. If you know the formula, here the bird is at rest and the bird is just above the medium of water, just above that. It's not that here we have that length, but in this case it's not like that. It's different scenario. Here you have the height h and the fish is having a particular velocity v naught. Let's say fish has some velocity v naught. In this particular situation, fish has some velocity v naught. Okay, then what will happen? We will get a beautiful formula. Beautiful formula. H apparent h by mu. Okay, after differentiation we will get dh apparent with respect to time and 1 by mu dh by dt. After resolving that, you will get v apparent equal to v naught by mu. This is what you have to remember. That means, what is this? Velocity of fish observed by bird. Who is the observer? Here in this particular case, bird is the observer. Okay? Who is being observed? Fish. You have to remember this formula. Simple. What you have to remember is V apparent equal to V naught by mu. Simple. This one is important. Velocity of fish. Here in this case, velocity of fish which is being observed by bird. That means what velocity is being observed by the
bird. At what speed, at what velocity that particular fish is being observed. That means apparent velocity. It's not the real one. Apparent. Simple formula V naught by mu. You have to remember this one. V apparent. Apparent velocity, which is equals to what? V naught by mu. If you just focus on this formula, you can solve any questions related to this types. It's very simple. Understand the question, put the formula, do some calculations, get the answer. Solve these types of questions with the help of this particular formula. And now let's solve this, on this formula some questions. What if you don't remember the formula? What if you don't have any formula sheet and you are having overconfidence? Then you will be lost in the jungle of this examination. There are some students who think themselves too smart, but they aren't. Don't think like that. I know everything, all knowing. Okay, let's solve some questions. Very simple question. Okay, simple questions are important questions. Here, bird is at rest, and here the height is h, and the fish is moving with certain velocity, let's say 12 meter per second. Now the question is velocity of fish observed by bird. Give me the answer for this question. The value of mu, 4 by 3, the same, 4 by 3. What is the answer? 9 is the answer. Simple, very simple. Just put the value, formula V naught by mu. V apparent. V apparent equal to V naught by mu. V naught is very simple, 12, 4 by 3. After solving, you will get the answer 9. 3 times 3 is 9. It's very simple. You will get the answer 9. That means the velocity of fish is 9 meter per second. That is being observed by the bird. It's very simple. These types of questions, can you solve if it comes in the exam? Yes or no? Now, here comes the next question. Okay, write both the formula in one place. H apparent equal to H apparent H naught mu जाने वाला upon mu आने वाला. This is the first formula that you have to remember, and the another formula V apparent, which equals V naught
म्यू जाने वाला अपॉन म्यू आने वाला. Simple, you have to remember, v naught by mu in this also. This one. Another question. Bird. Now in this scenario, bird has some velocity 10 meter per second, and fish is also having some velocity, let's say 12 meter per second, and the value of mu remains the same, 4 by 3. Velocity of fish, observed by bird, 10. In this scenario, what is the answer? What if the bird and the fish both have some velocity? Now in this scenario, bird is not at rest. Bird has some velocity, let's say 10 meter per second, and fish is also having some velocity, 12 meter per second. In this situation, what will happen? What will be the velocity of fish that is being observed by the bird? Because in this scenario, bird also has some velocity, 10 meter per second. Think and answer. What is the answer? Pasha? Is it 19? 19. Teen. Very good. Of course, 19 is correct. How? 10 plus? 10 plus 9, 19. Okay. That means you are adding that particular velocity of. Okay. 10 plus 9. Nine plus 10. Velocity of fish observed by bird, because it needs some extra brain cells. 9 plus 10, because the same thing, the same scenario, if you just observe that, a great mathematician like, I'll encourage me, what they do is very simple. They take some tasks, some problems, they sit back and try to understand, in this question, what should I do so that I'll get the answer, the same answer
in less time. That makes a mathematician great or physicist. It's very simple. Look at the scenario, try to analyze the situation, try to put the formula, solve, get the answer. It's very simple. 9 plus 10, 19. Wow, what a scenario. Another. For this we have get the answer 9, then plus 10, total 19. Or you can do the same question in by using another method also. Let's suppose that this bird has the same, it does not have any velocity. Let's say this bird is at rest, अगर ये रेस्ट पे है, मान लो इसको ये रेस्ट पे है, then take that same scenario, h by mu plus this, h by mu plus this particular length, you will get the same answer. H is simple, 12 by 4 by 3 plus 10, 3, 9 plus 10. This is also valid. Same thing. Now we are going to just change the scenario here. Another question. Bird has the velocity, let's say 18 meter per second, and the medium is the air, and the fish, in this scenario the fish is at rest, she might be dead, who knows. Mu equal to 4 by 3, velocity of bird observed by fish, observed by fish, solve. $24. How many of you are getting 24? Everyone. And 24 is correct. Done? Should we move to the next question? A simple formula, okay? What do you have to do in this particular question? Mu v. Why? Why? Yes, of course. Mu v. Mu 4 by 3 into v, 18. 3 6 are 18. That's equals 24. That equals 24. It's very simple. How? Because the fish is at rest. In that scenario, you can use this particular formula. What if it's not at rest? Scenario changes. Then you have to put anything, like put bird is at rest. Solve the question like this one. In this scenario, fish has some velocity like 12 meter per second, and the bird also has the velocity.
you can solve like put this is at rest and put this formula. You will get this answer. In this scenario, fish has some velocity, na? And this fish is at rest. Simple formula. Whenever these kinds of things happens, just put the formula UV. Yuvraj Singh. UV. UV. U is mu, and then V, the velocity of that bird. Okay. Next question. Okay, another question. Same question. Now in this particular question, I'll give some velocity to the fish also. Let's say fish is also having another question. This one. Fish also has, let's say, 12 meter per second. Then what happens? Same question. Same question. Now in this scenario, fish also has the velocity. Then what happens? Mu the same, mu 4 by 3. 36. How many? Yes, you're right. Simple. 18 into 4 by 3 plus 12. Put this at rest, even though it's not. Okay, just suppose. Then 3 6 times 24 plus 12, that equals 36. यहां पर हमने इसको मान लिया है, ये क्या है? रेस्ट पे. एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है, मान लिया है. जिसे कुछ लोग मान लेते खुद को, लेकिन होते नहीं. सेम सिनेरियो. यहां पर हमने क्या किया, इसको रेस्ट पे मान के ये जो भी था इसको हमने h मान लिया है, जो इसकी स्पीड थी h. समझ गए? और h करके फिर उसके बाद में म्यू प्लस l करके सॉल्व कर देना है, जो भी रहेगा. सिंपल सिंपल सा तरीका लगाना है. इसके बाद देखो, another scenario. What if I give some value to mu? Here mu equal to, it's not air, mu equal to 2. Here mu is 4 by 3. Then what happens? First question here. First question I am writing here. Okay, velocity of fish. Velocity of fish observed by bird. Second, velocity of bird observed by fish. Observed by fish.
What's the first answer or the first equation? Here in the first scenario, the observer is bird. If the bird, then what you will do? What is the formula? Here you will do 12 into 2 by 4 by 3 plus 18. Yes or no? After solving, what you will get? You put this one above into 3, 4 3s are 3 6 are 18 plus 18. Is it 36? Is it 36? What about this one? Second. How much? What's the answer? 50. Suma, what's your answer? Solve. What's the answer? 20. Okay. Others? 39. 30. Solve, solve. Solve as fast as you can. Fish is the observer. If fish is the observer, if fish is the observer, then what you will do? How will you write the equation? How? Bolo? If fish is the observer in this scenario, what you will do? Just opposite one. 18 into, after this, 4 by 3 upon 2 plus 12. It's very simple, man. Put this one here and you will get what? 2 3s are 6 into 3, 12 plus 12 equals 24. 12 plus 12, 24. Yes or no? Now the main question is, there are some students, they are not able to grasp this concept that when we are asking the velocity of bird observed by fish, then how do we get this, all this? How? Here, fish is the observer. Just see the opposite. Who is coming? Bird is coming with a velocity 18. Just put that 18. Who is observing? Put there mu 4 by 3. And then who is coming? 2 remaining plus 12 plus 12. Yes or no?
Same scenario, whoever is observing, you just have to add their velocity. Bird, you are adding this here, plus 80. Yes or no? Here, fish, adding 12. जो भी देख रहा है उसको जोड़ दो. जोड़ दो या तो जड़ दो. ये देख रहा है ना, इसको जोड़ दो, +12. ठीक है, bird +80, +80. These kinds of questions might be asked in your exam. Another scenario, let's say, what if the water levels also starts moving? Third scenario, water levels start decreasing. Bird has some velocity, fish is also have some velocity, and water level is going down. In that scenario, what happens? Let's see. Prachi, are you able to understand? Little by little, day by day. Try to understand, okay? One by one. Let's say the bird has the velocity 12 meter per second and it's air, mu1, and here mu equal to 4/3. Fish has the velocity, let's say 18 meter per second. This question, have you solved this question? Yes or no? The same question? Yes or no? Yes? Or it's a different question? Yes, then solve. In the previous question, the value of mu was, I think, mu equal to 2, maybe? 2? Okay. The previous question. 2 or 1? In the previous question. Okay, then solve. The same thing, okay, here also, the velocity of bird, velocity of fish, velocity of bird. Same scenario. Velocity of bird observed by fish. What is the answer? First answer 27. Okay. And how will you write the equation, Pasha? Pasha, Altaf, tell. 12 into 1 by 4/3 plus 18. Then after solving, what you will get? You can write this 3 here. 3, 9 plus 18. That equals 27. Is it true? Yes or no? Shifa, what do you think? Is this question, is this answer right or wrong? Okay. What about the second question? 36? How? Let's say, Shifa, tell how. How to solve this particular question?
18. Here the observer is fish. 18 into 4 by 3 plus 12. Very good. 3 6 are, that means 24 plus 12, that equals 36. And that's the final answer. Yes? Now, in this question, let's say we are going to change something. You are getting some different answer? दोनों गलत है. Why? Just opposite. Acha, question. Question is just opposite. Answers are opposite. Yes. Suma, what are you getting? First one? 18. 18 by? Yes. Acha, acha. Just opposite, na? Okay, no problem. Just reverse that. First question, this solution will be there, okay? For the second, this one. Opposite. Now the next question. Another question. Let's say we have changed the, water level. Water level. Fish has the velocity 16 meter per second. Bird has the velocity 14 meter per second. And the water level is going down by 2 meter per second. You can do like this also. Fish 18 meter per second. Meter per second. Bird 12 meter per second. And you are the observer. You are seeing the scenario. Velocity of fish. Fish observed by bird. Observed by bird. In the first question 16, the same question we have added the water level also, that becomes 18. Yes, yes, everything is same. What's the answer? What's the answer, man? कितना आया? बोलो.
शिफा कितना आया? 36. Yes, 36 is correct. This question, this one is the same. यहां पर जो इसकी वेलोसिटी थी ना, इसको ऐड कर दिया हम लोग, समझ गए? ये वाटर लेवल नीचे कम हो रहा है ना, तो इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 18, और ये माइनस कर दिया इसको, तो 12 हो गया, समझ गए? तो उसको 12 जो हुआ उसको हम लोग ऐड कर दिए, तो यही वाला आ गया ना फिर से, 18 इंटू 4/3 प्लस 12, 24 प्लस 12, 36. क्वेश्चन ये है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन. वाटर लेवल्स का नीचे आ रहा है. You're getting different answer. Which answer? Anyone else? 25.5? No? Yes? How? अच्छा, h by mu. Okay. Then plus 12. How? Formula. Okay, no problem. Write the heading TIR. Just remember that two formula, okay? उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके हो जाएंगे, उसको अच्छे से याद रखना है. हेडिंग डालो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एंड सॉल्व. फॉर्मूला अच्छे से याद रख के सॉल्व कर देना, काम खत्म. जो भी आंसर आएगा टिक कर देना. वहां पर ऑप्शंस तो रहेंगे ना एग्जाम में. एलिमिनेशन मेथड यू हैव टू यूज. एलिमिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR. TIR. ओके. देखो, फर्स्ट रेस यहां से मान लो जा रहा है, सबसे पहला यहां से एक रे गया, तो देखो कैसे होगा, टोटल यहां से आ रहा है रेस. ये रेस आया, फिर उसके बाद ऐसे गया, पहला रेस, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा,
हम लोग यहां पर एंगल इसका बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, रेस का 2 फिर 3 और एंगल बढ़ा दिए, एंगल बढ़ा दिए तो सीधा इसी पे आ गए, 90 डिग्री पे आ गए, ये 4th, इसके और बढ़ा दिए एंगल, तो अभी ये क्या हो गया, पूरा TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा रेस आ गया इधर, ये 5th वाला है। Some important points, right? First, denser to rarer medium. Another point, mu1 sin I equal to mu2 sin R. Snell's law. If we increase I, R also increases. Another, angle of incidence equals less than I, for which angle R becomes 90 is called critical angle, critical angle. Represent that as, like this, critical angle. If angle of incidence is less than critical angle, then what happens? Refraction. That means mu1 sin I equal to mu2 sin R. In this scenario, no TIR, no total internal reflection, when this is the condition. You have to understand what is critical angle. It's very simple. Angle of incidence for which R becomes 90 is called critical angle. That means in this, the rays 4th one, angle of incidence happens and the critical angle 90 डिग्री, यहां से हम लोग इस रेस को भेजे और ये 90 डिग्री हो गया, तो इसी को 90 डिग्री जो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने भेजा, और आर उसका कितना हो गया 90 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल. क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. द 4th रेस यू सी, जस्ट ऑब्जर्व दैट 90 डिग्री हो गया, ये वाला, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल कम है या क्रिटिकल एंगल तक है तो TIR नहीं होगा, नो TIR, नो TIR. लेकिन थोड़ा सा भी इससे ज्यादा हुआ, थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बिट, तो TIR हो जाएगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस मीडियम से गया उसी में वापस आ जाएगा. अगर उससे कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब इसमें जाएगा, दूसरे में. अब देखो अगला सिनेरियो.
This is first scenario. Second, what if angle of incidence is equals to the critical angle? That means I becomes angle of incidence becomes 90 degree, R becomes 90. Then what happens? Theta c, then refraction happens, refraction, and here the angle R becomes 90. That means mu1 sine theta c equal to mu2 sine R. That means 90. Sine theta c equals to mu2 by mu1. Third, I is greater than theta c, then TIR happens on the surface, same surface. मिरर की तरह तरह से बिहेव करेगा. That means it's like this. Let's draw the normal. Angle I becomes angle R. Same. If this is I, this is also I. TIR happens. Why? Because angle of incidence is greater than critical angle. Then the surface starts behaving like a mirror. When angle of incidence is less than critical angle, refraction happens and no TIR happens in that scenario. But what if angle of incidence is greater than critical angle? Then TIR happens and the surface behave like a mirror. What if I is equals to the critical angle? What happens is the angle R becomes 90 degree and sine theta c is equals to mu2 by mu1, like that. All this is the basics of this particular article. This article is very, very important for your exam perspective. You have to remember this, okay? This one. This happens when I is equals to the critical angle. Then this scenario happens that sine theta c, critical angle, which is equals to mu2 by mu1. Here you can write mu rarer, mu denser. They are talking about the medium. You can also add this one. Have you written, Sadia? Another. Just write the basic concepts, okay? R equals 90 degree. This one is mu2, here mu1. This one is rarer medium.
This one is denser. At critical angle, we know mu1 sine theta c, which is equals to mu2 sine 90. That equals sine theta c, which is equals to mu2 by mu1, which equals here this one the same thing, mu rarer by mu denser. Okay, be fast. Here I is equals to theta c. In some scenario they also use this formula, right? Just write the formula. Sine theta c critical angle is equals to mu chota upon mu bada, that is equals to lambda chota upon lambda bada, which is equals to v chota upon v bada, velocity. You can use this also in some scenario. Just write one beautiful graph. They might ask, okay, they might in advance, they have asked, so they can ask. Just remember the graph. Theta c, here 180 minus 2 theta c, here 90 minus theta c. This is important graph, just remember that. Just remember. Here the graph is, it's not continuous. यहाँ से सीधा जंप करके इधर जाता है, थोड़ा सा भी बढ़ाए अगर फंक्शंस, जैसे ये क्या है, कैसे आए ये ग्राफ. फॉर I is less than
critical angle refraction. So deviation equals to r minus I. Deviation equals sine inverse mu1 by mu2 sine I minus I. And the proof of this, mu1 sine I equals mu2 sine R. Sine R we can write mu1 by mu2 sine I. Sine I. R equals sine inverse mu1 by mu2 sine I. At I theta c, TIR happens. So deviation equals to 180 minus 2I. In some question they might ask this formula directly. We have already studied this one. Deviation is equals to r minus 1. It's a 1 or I? I. It's not 1. That means the bigger angle minus small angle. This is the graph of deviation and I, angle of incidence. What happens in this scenario is that keeps on increasing, just jump. There is no continuation. It's a breaking off, that graph is already break. So be careful. Okay. Hello.
हो गया, लिख लिए? बोलो। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. And you have to also remember the value of this, deviation versus I. That 360 minus or 180 minus. 180 minus what? 2 I. It's not I, man. Theta c na, or 2I. Remember during exam. Another question. Mu 1 mu root 2. Find critical angle. Critical angle. Find critical angle. Sumar, what is the answer that you have got? 45 degree. How many of you have got the answer? 45 degree. Anyone? Yes, correct. 45 degree. Which formula have you applied? Sin theta c, mu 1 upon mu 2. It's like, that rarer medium and then some medium, like that. Sin theta c equals, rarer medium is what? 1. This one is root 2. After solving, we will get the answer. Theta c, 45 degree. It's very simple.
And these types of questions are of utmost importance for the upcoming exam on 3rd of May 2026. Be prepared for these types of questions. It's very important. Critical angle. Critical angle is very critical. Prachi, have you understood the question or not? This one, very simple. Rarer, denser, sine theta c. Critical angle is nothing but this one. Sine, 1 by root 2, sine 45 degree. Another question. Now this question is somewhat interesting. Try this question. A, B. This is theta. Mu is which is equals to root 2. Now the question is find theta so that rays will not come out from AB. Outside is nothing but the air medium. Solve. Old students, try to solve this question. Be fast. You have to find that theta so that the rays will not come from this AB. What that theta is? Theta. What is that theta? Tell. Pasha. What's the answer? Let the rays come inside. If this is theta, this is 90, then what is this? 90 minus theta. Then let's take the normal. This is normal. And then solve. Suma, it's more than 45? Yeah, yes, very good. It's more than, theta should be greater than or equal to 45.
then it will not come outside from AB. I should be greater than equal to what? Theta C. I. इतना होना चाहिए वो. Solve. साइन थीटा सी हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, बोलो. साइन थीटा सी इक्वल टू 1/√2. साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल. ये रेयर, यहां पर हवा है बाहर, एयर, और ये डेंसर है, तो ये लिख सकते हैं थीटा सी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री. अगर थीटा क्या रहेगा, 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा, मतलब थीटा से, तो क्या हो जाएगा, ये फिर इधर नहीं आएगा रेस, मतलब ये ऐसे हो सकता है चला जाए छू के इसको ऐसे, या फिर वापस ऐसे हो जाए TIR, लेकिन ये इसमें से बाहर नहीं निकलेगा वो, और वही नहीं होना चाहिए. ये कब होगा, नहीं, जब थीटा कितना होगा, क्रिटिकल 45 डिग्री. ठीक है, कितना होना चाहिए, 45. बोलो, हो गया. और थीटा भी ऐसे होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, बोलो, थीटा. ये जो है सेम है, तो यही आएगा. बस ये तुमको दिमाग में रखना है कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये टोटल कितना होगा बताओ. देखो, अगर ये थीटा है प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा ना, कि अगर ये 90 है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको. तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, बस इतना दिमाग में रखना है तुमको, और सॉल्व कर देना रेरर और डेंसर मीडियम के थ्रू. बस रेरर वाला कितना है, एयर है तो बाहर एक रहेगा, और अंदर कितना है, √2 है, तो ये चीज आ जाएगी थीटा सी क्रिटिकल एंगल. बस तभी तो बाहर नहीं जाएगा ना वो. और क्रिटिकल एंगल क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हम लोग कराए उसके ऊपर, तो क्या हुआ, कहां तक क्रिटिकल एंगल था, जब आर हो गया 90 डिग्री. आर क्या हो गया था, 90 डिग्री, और थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ा दिए तो क्या हो जाता था, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता था, फिर वापस वो लौट के आ जाता था उसी मीडियम में. अब देखो अगला, समझ गए, बोलो, समझे कि नहीं. यहां पर ऐसे ही करेंगे हम लोग. आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, और थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, और थीटा सी हम लोग कितना निकाल दिए, बोलो, 45 डिग्री. तो इसके बराबर ये रहेगा, तो क्या होगा, इसमें से नहीं जाएगा फिर, और यही बोल रहा है इसमें से नहीं जाना चाहिए, रेस इससे नहीं निकलना चाहिए, तो थीटा इतना होना चाहिए क्रिटिकल एंगल जो आपने यहां पर कराया है, तब जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, रेस वहां से नहीं निकलेगा. अब इसके बाद ये लिख लिए, बोलो, इधर. अब देखो अगला,
अब देखो एक क्वेश्चन थियरी वाला समझो. A room contains, लिख लो इसको. A room contains air in which the speed of sound is 340 meter per second. The walls of the room are made of concrete in which the speed of sound is 1700 meter per second. Find the critical angle. Find the critical angle for total internal reflection of sound at the concrete air boundary. This one is A part. B part. In which medium must the sound be traveling to undergo total internal reflection. Assume sound waves follow Snell's law. Solve this question. Try to solve this question. Don't just be frightened by just seeing these types of questions, the lengthy questions. This question does not have any strength. Just put the value. If you remember, if I have just given the three formula for velocity also, velocity chota bada, like that. If you just remember, put that. That's all. Sine theta c, it's very simple, just one line question. Theta c equal to 340 upon 1700. Just solve this.
You will get the answer 17, 1, 2. That means you will get 2 by 10. That means 1 by 5 sine theta c. Okay, sine theta c, which is equals to 1 by 5, and theta c, which is equals to sine inverse 1 by 5. This is the answer. A part. This one is A part. And B part, think. Yes or no? Nida, what do you think? Nida, try to solve the question. Pasha, have you understood this question? No? Yes, try to solve, try to just assume sound waves follow Snell's law. Assume that. Dishan, what do you think? In which medium? They are asking about the medium. They are asking in which medium must this sound be traveling to undergo total internal reflection? Assume that. Sound waves follow Snell's law. In which medium they are traveling? In this one, you just understand a room contains air in which the speed of sound is this one, 340 meter per second. Walls of room are made of concrete in which the speed of sound is this, 1700 meter per second. Find the critical angle that you have already followed. Just find out critical angle for total internal reflection of sound at the concrete air boundary. In which medium must this sound be traveling to undergo total internal reflection? That means in which medium must the sound be traveling? In which medium must the sound be traveling to undergo total internal reflection? That means simple. साउंड किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा जिससे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? सोचो किस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, टीआईआर के लिए कौन ट्रैवल कर रहा होगा? साउंड। किस मीडियम में होगा वो? रूम के अंदर कौन सा मीडियम है? एयर। एयर इज द आंसर। एयर एयर रूम के अंदर क्या? एयर। एयर एयर इज द आंसर। I'm giving you some, questions for your homework. Okay, just practice, 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 and practice if you want to be better. This question is very easy because this question is from IIT. A ray of light is incident at the glass water interface at an angle I.
it emerges, it emerges finally, finally parallel to the surface, parallel to the surface of water, of water, water. Then the value, then the value of mu g would be, would be first 4 by 3 sin I, b 1 by sin I, c 4 by 3, d 1. There are some questions, they just seem like tough, but they are not tough. There are some questions that seems to be tough, but they are not. This is glass, this is water, here air. Mu of water is 4 by 3. This one is R. Okay. Try to solve this question at your home. Have you written? Be fast. Have you written? Be fast so that I can give you another question. How many of you have solved this question? Yes, Suma? Second, very good. Second option is correct. It's very simple, Snell's law.
हो गया, सॉल्व किया इसको। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। म्यू जी साइन आई इक्वल टू, ये कर देंगे, क्या करेंगे बताओ। ठीक है, 1 × sin r, और ये कितना है, ये 90 है, sin 90। बोलो ये पूरा 1 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये म्यू जी चाहिए, तो म्यू जी मैं डायरेक्टली इधर लिख देता हूं, म्यू जी इक्वल टू 1/sin i, ये हो गया बस। यस ऑन। Another question. Another question for your homework I'm giving you. Without practice, these kinds of questions, they are from IIT, but you can solve in 1 line, 2 line. All these questions are easy ones. Let's say this one is also from IIT, very easy question. A larger glass, a large glass slab mu equals 5/3 of thickness 8 centimeter is placed over a point source of light on a plane surface. It is seen that light emerges out of the top surface of the slab from a circular area of radius r centimeter. What is the value of r? What is the value of r? Value of r, have you written? Write fast.
Write the heading prism. Write the heading after this question. Write the heading prism. 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 And make this diagram. This is A. This is air. This is, let's say, mu. This one is R1. This angle is R2. Okay. Angle of prism. First thing you have to write angle of prism. In this angle of prism क्या है? Angle of prism. Write the heading angle of prism. This is I. This is E. This is A. Angle of prism. Write the heading angle of prism. Angle of prism. First, 1 sine I equal to mu sine R. mu1 is air. यहां पर air है, इसके लिए यहां पर 1 लिख दिए. mu sine R2 equals to 1 sine E. ये वाला E. फिर सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहां पर जो R1 प्लस R2 वाला एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाले एंगल के बराबर. जो एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको बोलते हैं, इसको ये एंगल ऑफ प्रिज्म है. एंगल ऑफ प्रिज्म ये ए के बराबर है. तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तीसरा नेट डिविएशन जो होगा वो आई प्लस ई माइनस ए के बराबर होगा. थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट. वेरी गुड. हाँ 6 आएगा इससे पहले वाले का आंसर. वेरी गुड. देखो इसमें आई प्लस ई माइनस ए हमें नेट डिविएशन दे देगा. दिस प्लस दिस माइनस ए विल गेट अस नेट डिविएशन.
कि कितना डिविएशन होगा। मतलब कैसे आया कैसे आया, ये तो ऐसे जाना चाहिए था ना, इसको तो इधर जाना था। बोलो, ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर था, ये आया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये तो नॉर्मल इसका इधर जाएगा, इसको इधर कर दिया इसने, ये वाले ने, बोलो प्रिज्म के अंदर। लेकिन फिर ये बाहर निकलना चाह रहा था तो ये तो ऐसे जाना चाह रहा था ना, इसका स्ट्रेट लाइन तो ऐसे है कि भाई मैं मस्त होके, मैं पहले वाला बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, बोला अरे ऐसे कैसे जाएगा, इधर मोड़ा इसको, फिर बोला नहीं चलो कोई बात नहीं, इन लोग मोड़ दिए मैं ऐसे जाऊंगा, फिर बोला अरे अरे ऐसे कैसे जाएगा, फिर ये रेयर मीडियम आ गया बाहर की तरफ, तो इसने भी घुमाया। तो जो भी पार है इसको घुमा रहे, समझ रहे। ये बोला अरे यार मैं मस्ती के साथ जा रहा था अपनी स्पीड में, ऐसे सीधे जा रहा था, इसने घुमा दिया, फिर इसको इधर घुमा दिया, तो ये कितना घूमा, नेट इतना घूमा, I प्लस ई माइनस ए, इतना घूमा। और यहां पर जो ये R1 प्लस R2 इसके बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। शिफा समझ में आया? बस लिख लो जल्दी फटाफट। और ये क्या है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, final refracted ray. You have to just remember the result for the questions. Whenever difficult questions comes, they might ask. Done? Okay. Have you drawn this? Yes. Let's say this one is R1, this one is R2, this one is A, this one is I, this one is E. Okay, then this one will be, ये एंगल क्या रहेगा वो बताओ, बोलो। थिंक, बोलो। ये माइनस रहेगा ना, ये पूरा 90 है, तो ये कितना 90 माइनस R1, और ये 90 माइनस R2। अब ये कैसे आया, अभी देखो, देखो ऐसे सिंपल, A प्लस ये एंगल 90 माइनस R1, ये एंगल प्लस 90 माइनस R2, सम कितना हो जाएगा 180 के बराबर। अब तुम ध्यान से इसको देखो, बोलो क्या क्या चीज हो जाएगी इसके अंदर, किसके बराबर हो जाएगा। देखो ये पूरी चीज, ये और ये खत्म हो जाएगा, ये और ये पूरा। तो ए देखो R1 प्लस R2 के बराबर,
ए इक्वल टू R1 + R2, ये इधर चला जाएगा ना, तो बस याद रखना, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, ए इक्वल टू R1 + R2 होता है बस। और नेट डिविएशन में क्या रहेगा, I प्लस ई माइनस ए, ए क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो ये वाला है, दिस प्लस दिस माइनस दिस हमें बता देगा कितना डिविएशन हुआ है, नेट डिविएशन। जैसे वो भी बना के दिखा देता हूं आप लोग को, इससे मैं बना देता हूं, है ना। अब देखो ये ऐसे जाता सीधे, ये तो ऐसे जाना चाहिए ना, इसको ऐसे जाता, वो कितना डिविएशन हुआ है टोटल, तुम देखो ध्यान से, एक डिविएशन तो यहां हुआ, डिविएशन 1, एक डिविएशन यहां हुआ है, डिविएशन 1, और एक डिविएशन देखो, ये तो ऐसे इसको जाना चाहिए था सीधे यहां पर, दूसरा डिविएशन यहां पर हुआ है, डिविएशन 2, दिस प्लस दिस करेंगे तो नेट डिविएशन हमें मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। डायरेक्टली उसको फॉर्मूला याद रखना, है ना। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, क्वेश्चन ये है 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये है हमारा 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है इधर, बोलो, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना, बोलो, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म 70, यही है ना, बोलो। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, हाउ, हमें पता कैसे चला कि वही है, क्योंकि इधर बना हुआ है, नहीं नहीं नहीं, वो तो है, ठीक है बात, तुमको ये देखना है कि वो कौन सा सरफेस है जिसपे लाइट के रेस को हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल रहा है, देखो उसके बीच का एंगल, इस पे इंसिडेंट हुआ है ये वाले सरफेस पे, लेट से ये ट्राइंगल ए बी सी है, मान लो, लेट्स सपोज ए बी सी है। अच्छा, ए और सी पे क्या किया गया है, लाइट को इंसिडेंट कराया गया है, बाहर ए और बी से निकल रहा है ये वाले सरफेस से, दो सरफेस, ये वाला सरफेस यूज हुआ, ये वाला सरफेस, ये हुआ क्या, इज इट इन्वॉल्व बी और सी, नो। अच्छा, ये वाला सरफेस जिस पे आया है, इंसिडेंट हुआ और जिससे निकला है, उसके बीच वाला एंगल ये है ना, ये वाला एंगल लेंगे ना, बोलो, तो इसके बीच का जो एंगल है वही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जिसको बोलते हैं 70 डिग्री, खत्म, समझ गए, तो इसके बीच में ही आएगा 70 डिग्री, खत्म। इसको एक और नाम से बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो अगर कभी क्वेश्चन में उसने दे दिया रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चीजें चेंज करूं, अभी इस बार मैंने
एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ, बोलो 50 डिग्री, 50 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गया ना कैसे रहेगा, कौन सा एंगल। अब अगले वाले क्वेश्चन में मैं यहां से इंसिडेंट करा के ऐसे इधर निकल, तो ये वाला हो जाएगा। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस वो कहीं भी हो सकता है। लिख लिए, लिखो जल्दी फटाक से, इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। अब यहां पर निकालना है आपको नेट डिविएशन, अगले क्वेश्चन। अब आप लोग समझ चुके हो कि यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। चलो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, फाइंड नेट डिविएशन। नेट डिविएशन आपको बताना है इसके अंदर, ओके। ये 60 डिग्री है, अच्छा ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल है इसके ऊपर। नॉर्मल, ये हमारा है R1, ये R2। ये एंगल दिया है मैंने 60 डिग्री, यहां एयर है और ये E है। नेट डिविएशन बताइए कितना आएगा। म्यू यहां पर है √3, यहां भी एयर है। अब सॉल्व करो नेट डिविएशन। बोलो 60 डिग्री आ रहा है, बोलो कितने लोग का 60 आ रहा है। वेरी गुड, सही है। नेट डिविएशन का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे। नेट क्या लिखेंगे, I प्लस E माइनस ए। आई कितना है बोलो 60, E कितना निकालना है, ए कितना 60। अच्छा नेट डिविएशन फिर कैसे निकलेगा, कौन सा लगाएंगे, हाँ लगाओ। जल्दी करिए फटाफट। अच्छा हमें एक चीज और पता है कि R1 प्लस R2 क्या होता है, R1 प्लस R2 क्या होता है, ए के बराबर है। तो अब तुम देखो R1 और R2, अगर इसको मान लो हम लोग, ये देखो 60 है, अगर इसको मान लो x मान लो, तो एक मतलब R1 कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 60 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री। तो मतलब ये R1 R2 ये कितना है 30 है, ये भी उतना ये भी उतना।
अब तुम यहां इसके हिसाब से तुम इसको निकाल सकते हैं सॉल्व करके। समझ गए? निकालो, सॉल्व करो बाकी लोग। अब स्नेल्स लॉ लगा दो, इसका, इधर मीडियम का और इधर का। क्या करोगे? म्यू, म्यू साइन ये लगा दो। म्यू साइन क्या करेंगे? म्यू साइन बोलो 30 डिग्री इक्वल टू 1, 1 क्यों? क्योंकि बाहर कितना है? साइन ई कर दो, साइन ई, मुझे ये निकालना ना, साइन ई। अब देखो इसके बाद यहां साइन कितना आ जाएगा? ये म्यू है ना, तो म्यू कितना लिखेंगे यहां पर? √3/2, क्योंकि 1/2 आएगा साइन 30 का, और ये साइन ई। अब साइन में √3/2 किसका आता है? 60 का, तो इक्वल टू 60। अब मुझे यहां पर ये पता चल गया, ई के प्लेस पे मैंने रख दिया इसको, इसके प्लेस पे 60, ये 60, ये 60 कट गया, तो नेट कितना आ गया? 60। तो ये नेट डिविएशन कितना हुआ है? 60 डिग्री का नेट डिविएशन हुआ है। नेट डिविएशन टोटल 60 डिग्री का हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में वो क्या करेगा? इसका कुछ चेंज कर देगा एंगल। तुमको सब कुछ पता होना चाहिए कैसे क्या निकालना है। तुमको ये सब रिजल्ट पता होना चाहिए कि नेट का कितना है, R1+R2 कैसे कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं सरफेस पे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आराम से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, और ये टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं, है ना, पानी रख दूं, सेम क्वेश्चन बस पानी मैंने रख दिया। ये 60 है, 60 म्यू √3, यहां इसका नॉर्मल ड्रॉ करो। ये हमारा क्या है? ई। ये 60 डिग्री। अब मैंने यहां पर पानी भर दिया है, पहले वहां एयर था, पानी, वाटर, और इसका म्यू जो है √3/2, √3/2 क्या बोल रहा है निकालने के लिए? फाइंड नेट डिविएशन। बताओ कैसे निकालेंगे नेट डिविएशन, बताइए।
बोलो। क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है? दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो यहां पर सिंपल सा वही चीज करना है। नेट डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? बोलो। आई प्लस ई माइनस ए। अच्छा, मुझे ये भी मालूम है कि R1 प्लस R2 कितना यहां ए के बराबर होता है। R1 प्लस R2 जो दिया है 60 दिया है, इसको अगर x प्लस एक्स में मान के सॉल्व कर दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब यहां पर R1 कितना है? 30 डिग्री ये भी है, 30 ये भी है, 30 30। समझेगी नहीं? अब मेरे पास में मुझे ये मालूम है, मुझे ये मालूम है, अब मुझे ई निकालना है। क्या निकालना है? ई। तो ई निकालने के लिए मैं ये वाला सिंपल सा तरीका लगाऊंगा। म्यू साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब यहां पर देखो म्यू कितना दिया है? म्यू टू √3/2 साइन ई। यस और नो? और यहां म्यू कितना है? √3/2। बोलो। इक्वल टू √3/2 साइन ई। यस और नो? अब देखो यहां पर √3/2 कट गया, बचा क्या? 1 साइन ई। साइन ई में 1 किस में आता है? नाइन्टी आएगा या कुछ और? बताओ कितना आएगा? सोचो जल्दी फटाफट। साइन 90। अच्छा एक चीज और, यहां पर मैंने √2 दे दिया, सॉरी, है ना? यहां √2 रहेगा, √2। अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। अब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बताओ। अब देखो √3/2 इक्वल टू √3/√2 साइन ई। अब कितना आ रहा है? ये देखो √3 कट जाएगा, यहां 1/2 इक्वल टू 1/√2 साइन ई। बोलो अब कितना आ रहा है? ये ऊपर चला जाएगा ना, √2/2 इक्वल टू साइन ई। आप क्या कर सकते हो? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2/2 ना, इक्वल टू साइन ई। अब कटेगा? बोलो अब क्या हो जाएगा? 2 ऊपर 2/2 2 से 2 कट गया, 1 साइन ई। तो साइन ई इक्वल टू कितना? 45। मतलब ई आ जाएगा, ई कितना? 45। ई पता चल गया तुमको। अब ये वाले चीज में उठा के रख दो यहां पर, सिंपल। देखो इधर नेट डिविएशन कितना? आई की वैल्यू 60, ई की वैल्यू कितना निकाले? 45 माइनस 60, 60 60 कट गया, नेट डिविएशन कितना आ गया? 45 डिग्री। ये हमारा आंसर, 45 डिग्री इज द आंसर। 45। हाँ हाँ, नहीं तो लेके आओ बुक। तो चाबी लेना चाहिए ना मम्मी से।
चलो बैठो मैडम, कुछ कराएंगे ना, अभी आएगा वो. Yes or no? How beautiful these questions are. You just have to cherish, solve, enjoy. Another question is very interesting. I'm telling you. Have you written? Yes, yes, be fast. This one you might have completed. All these questions gives us the perspective to understand life sometimes. Yes, yes, very interesting question I'm giving you. Just to solve this. This is 75 degree. This is last question, okay? Last question. Let's draw the normal. What is the question? Question is find the angle of incident for which, I'm telling you, you will cherish this question, in which, for which grazing emerges. Wow, what a beautiful question. That changes the scenario. Grazing. Solve this question, okay? Here the values are, let's say, I, here air equal to 90 degree, and this angle of incidence, which is Ig, which is equals to I. Solve this question. Okay, try to solve these questions at your home, revise. Today's lecture is over. Thank you.